मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, ये सबको पता है, एट द एज ऑफ 44, सब जानते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पर आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जा रहे। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मिल्टन, व्हेन डिड मिल्टन बिकेम ब्लाइंड? आई थिंक इट्स 1652। हिज बर्थ इज 1608 प्लस add 44, that is 52. Okay, he became blind at the age of 44 and the year is 1652. Understand? ये पूछा जा रहा है आजकल। Lycidas is a pastoral elegy written by Milton on the death of his friend. Pastoral elegy मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ। जो पेस्टोरल एलिजी होती है वो हम जैसे सैड एलिजी कह सकते हैं। सैड, कुछ भी सैड किसी के बारे में लिखना, जो मतलब कोई मिस हैपनिंग हो गई हो किसी के साथ, उसके अकॉर्डिंग लिखी जाती है। किंग जो मिल्टन थे, जो एडवर्ड किंग हैं, उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। उनकी डेथ पर उन्होंने लिखी थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लिसिडस, बहुत अच्छी पोएम लिखी है इन्होंने, ये एलिजी लिखी है। हु सेज ऑफ मिल्टन द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट? किसने कहा है द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट? ये जरूर कर लीजिए भी, क्या किसी ने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनको ये कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ। Milton, thou shouldst be living at the hour who remember Milton in a sonnet so passionately. ये किसने कहा है? मिल्टन, thou shouldst be living at this hour who remember Milton, कोई नहीं याद कर रहा है मिल्टन ने सोनेट पैशनेटली, इट्स विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, कर रहे हैं ये। हाउ मैनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी? ये कॉमन क्वेश्चन है। ये मिल्टन ने कितनी बार शादी की थी? 3 टाइम्स। फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ एंड थर्ड वाइफ। सेकंड वाइफ के लिए उन्होंने अपनी एक सोनेट भी लिखी है। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड ड्राइडन डाई? ड्राइडन, इन विच ईयर? दैट इज 1700। ड्राइडन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ये जरूर याद कर लेना किसका क्या है। ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी क्या है ये? अ क्रिटिकल ट्रीटाइज ऑन ड्रामेटिक आर्ट डेवलप्ड थ्रू डायलॉग्स, ये है जो डायलॉग्स के थ्रू डेवलप हो रहा है, ड्रामेटिक ट्रीटाइज। ओके, नेक्स्ट, ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी डेवलप्स थ्रू डायलॉग amongst 4 interlocutors. One of the following is not one of those interlocutors identified him. जो हमने ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है, जिसमें थ्रू डायलॉग्स amongst 4 interlocutors जो हैं, उनमें से कौन नहीं है? नोट कहा है, ये ध्यान रखना, नोट कहा है इन्होंने, ये चीज़ का ध्यान रखना। यूजीनियस क्रिटिक्स लेस्टी निएंडर, दैट इज लेस्टी। इन ड्राइडन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी निएंडर स्पीक्स फॉर, निएंडर किस लिए बात कर रहा है? ही इज स्पीकिंग फॉर मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ही इज स्पीकिंग फॉर मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले रिटन बाय ड्राइडन? दैट इज ऑल्सो अ नोट क्वेश्चन। See the question carefully and that is not okay। और इसका मतलब ये है, अगर नोट लिखा है तो एक नहीं होगा, 3 होंगे, वो 3 आपको याद करने हैं। ओके, दैट इज लव्स लेबर लॉस्ट, दैट इज नॉट ऑफ ड्राइडन्स वर्क। दैट ऑल फॉर लव, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, tyrannic love, these are Dryden's works। Dryden's All for Love is based on Antony and Cleopatra, it's based on Antony and Cleopatra। Who is the author of the essay of human understanding? Who is the author of the human understanding? Who is the author? The author is John Locke।
The author is John Locke. Who is the author of Mr. Badman? Mr. Badman, that is Mr. Badman Banyan. Mr. Badman Banyan. The central theme of the Dryden's The Hind and the Partner is. What is the central theme? The central theme is defense of Roman Catholicism. Defense of Roman Catholicism. And the next question series, आगे बढ़ते हुए हम we are discussing about the next question series. Dryden said in one of his critic treatise, ड्राइडन की बात हो रही है, ध्यान रखना अब. Our numbers verification were in their nonage till these two appeared. Whom does Dryden refer to in this observation? He is observation on Waller and Denham. Next, दोबारा हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं. Dryden said in one of his critical treatise, our numbers verification were in their nonage till those two appeared. इन दोनों के आने से पहले जो हमारे वेरिफिकेशंस थे, हमारी जो होम डज ड्राइडर किस चीज़ के दो किन के आने से पहले, दीज आर द वॉलर एंड डेनहम. सैमुअल बटलर्स ह्यूडिब्रास, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. सैमुअल बटलर्स ह्यूडिब्रास is a satire on Puritanism. Okay, Puritanism. It's a satire on Puritanism. One of the following work of John Bunyan is autobiographical. Which is it? Autobiographical है John Bunyan's Grace Abounding. This is Grace Abounding. John Bunyan, Grace Abounding. Bunyan's The Pilgrim Progress is. What is? It is an allegory. It's an allegory. Pilgrim Progress is an allegory. Who is the author of the play Venice Preserved? Venice Preserved. That is Thomas Otway. Who is Thomas Otway? Who is the author of the play? That is Venice Preserved, Thomas Otway. Gather ye rosebuds while ye may. This is the opening line of the popular lyric written by Robert Herrick. Which of the following? The following is counsels to girls. Gather ye those rosebuds, gather ye rosebuds where ye may. This is the opening line of the popular lyric written by Robert Herrick. Which of the following is counsel la girls? Which of the following plays is written by William Congreve? Famous play is written. That is The Way of the Word. William Congreve, The Way of the Word. Which of the following plays is written by William Wycherley? That is William Wycherley, The Country Wife. The answer is The Country Wife. Which of the following was the author of Rival Queens? Who is the author of Rival Queens? The author of Rival Queens is Nathaniel Lee. Here is a God's plenty. Who is Dryden referring in this remark? Here is God's plenty. Where is Dryden? Dryden is referring to Chaucer. The Fairy Queen, Divina Commedia and Pilgrim Progress are alike in one respect. What is it? These all are allegories. Fairy Queen, Divine Commedia, Pilgrim Progress. Fairy Queen, Divine Commedia and Pilgrim Progress. These are all allegories. One of the following Restoration playwright gave a happy ending to King Lear. Who gave happy ending to King Lear? Restoration playwright who gave? That's Nahum Tate. Nahum Tate. And the next question is, the theatre were closed down during the Commonwealth period in England. In which year were they opened? The theatre were closed in 1642. Okay, remember
The theatre were closed in 1642. After 18 years, they were reopened. That is 1660. Okay, understand, remind it. The age of restoration is so called because one of the following was restored to the English literature. Restoration is so called age of, that is Charles II. Okay. There are four interlocutors in Dryden's essay of dramatic poesy. Which of them represent Dryden? These tutors are Neander. Neander represents Dryden. Here lies my wife, here let her rest. Now she is at rest, so I am. This was a proposed epitaph to be engraved on the tomb of his wife. Who was this poet? This was John Dryden. John Dryden is the poet who wrote about his wife. Dryden's The Metal is a personal satire. Dryden's The Metal is a personal satire is on Shaftesbury. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैवेलियर पोइट. कैवेलियर पोइट आपको 6 बताए थे, उसमें से ये पूछा है इन्होंने कौन है. दैट इज लवलेस, रिचर्ड लवलेस. ही इज़ अ कैवेलियर पोइट. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बाय डॉक्टर जॉनसन. फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म who by Dr. Johnson. This is Dryden. Dryden. Name the most important Caroline poet. The Caroline poet Robert Herrick. Main most important Robert Herrick. The restaurant marks the real moment of birth of modern English prose. Who makes that observation? This is the mark of birth English prose. This is that. Who said this? That Matthew Arnold. That's Matthew Arnold. Samuel Pepys' diaries were written in coded language. When was it deciphered? These are deciphered in 1825. Okay. Zimri, Duke of Buckingham, is a character that appears in Dryden, Absalom, and Achitophel. Zimri, Duke of Buckingham, is a character that appears in Absalom and Achitophel. These are the questions. 50 questions we are discuss about. ये हम कुछ क्वेश्चंस है, ये सीरीज चलती रहेगी. ये तो कुछ क्वेश्चंस ही है. मेरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस करवाऊँ, जिससे आपके साथ प्रेपरेशन होती रहे. नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा न्यू वीडियोस, क्योंकि पोस्ट बहुत जल्दी फिल होने वाली है और कोशिश है कि मैं आपकी अच्छे से तैयारी करवा सकूं. धन्यवाद.